Yes, good morning students. Today I will start the topic quadrilateral. That is the third unit of standard 8. Before explaining quadrilateral, I will explain polygon. Polygon क्या होता है? Polygon is the combination of two words, poly plus gun. Poly means many and gun is sides. It is a combination of many sides. A figure made up of many sides. The definition of polygon is a closed figure. Closed figure मतलब close जहाँ से कोई भी खुली हुई ना हो. Closed figure made up of finite line segment. What do you mean finite? Finite means a figure in which we can count the lines of a finite line segment is known as polygon. Now, for example, three-sided figure is known as triangle. Triangle has three sides. Four-sided figure is known as quadrilateral. Five-sided figure is known as pentagon. Six-sided figure is known as hexagon. Seven-sided figure is known as heptagon. Eight-sided figure is known as octagon. Nine-sided figure is known as nonagon. And ten-sided figure is known as decagon. Now, in all the figures, gun is added. Gun means sides. 3 side, 4 side, 5 side, 6 side, so on. Okay. Now we will discuss about the type of polygon. Polygon. Main two types are there: regular polygon and irregular polygon. Regular polygons, there are two properties of regular polygon: all sides equal, all angles equal. रेगुलर पॉलीगन्स वो पॉलीगन होते हैं जिनकी सभी साइड्स बराबर होती है और सभी एंगल्स भी बराबर होते हैं. फॉर एग्जांपल स्क्वायर, all the sides are equal and all the angles are also equal. Irregular polygons are those which are not regular. जो regular नहीं है वो irregular है. For example, rhombus which has no side equal and no angle equal. For example, rhombus. Now you will ask, वहाँ पूछेंगे कि rhombus की sides equal होती हैं, then why it is not a regular? Why we are taking it as a irregular? All the sides are equal in rhombus. सभी sides बराबर होती हैं, but all the angles are not equal in rhombus. सभी angles equal नहीं होते rhombus में, so it is a irregular. Trapezium, parallelogram, all are the example of irregular polygon. जिस angle में या जिस फिगर में सभी साइड्स बराबर होगी उसके आगे हम लगाते हैं रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन. मींस ऑल द साइड्स आर इक्वल इन ऑन दैट फिगर. ओके. नाउ नेक्स्ट इज, नाउ आई एम कंटिन्यू माय टॉपिक polygon. There are also two type of polygon, convex and concave. First is convex polygon have two properties: all diagonals form inside. इसके सभी diagonals फिगर के अंदर की साइड बनते हैं, not outside. And every interior angle is less than 180 degree. और इसका हर एक एंगल 180 डिग्री से छोटा होता है. Opposite of convex is concave. First property is it's at least one diagonal from outside. इसका एक डायगोनल बाहर बनता है. Second property is at least one angle is more than 180 डिग्री और एक एंगल इसका 180 से
ज़्यादा होता है. For example, like this, I have made a rectangle. So the diagonal of rectangle is inside the rectangle. But in second, so first this angle is more than 180 and this is the diagonal outside the figure. So this is convex and concave polygon. Next topic is angle sum property. Next topic is angle. और नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? जितने भी हमारे एंगल्स हैं एक फिगर में उन सबका सम. नाउ इन ट्रायंगल देयर आर थ्री साइड्स. थ्री साइड्स मतलब हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? थ्री एंगल्स आर देयर एंड ऑल नोज दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. ओके. नाउ नेक्स्ट इज क्वाड्रेटर. क्वाड्रेटर हैज फोर साइड्स. For finding the angle sum property or sum of the angles of a figure, we have to divide the figure into triangles. Now we made the diagonal, so this figure divided into two triangles. So first triangle is 180, second is also 180. So it divided into two parts, it becomes 360. Next we will take pentagon. Pentagon, five sides. 1, 2, 3, 4, 5. First is we will divide into triangles. First, how many triangles are there? First, second, and third. There are three triangles. So we will multiply 180 by 3. 180 multiplied by 3 is equal to 540 degree. Same with hexagon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sides. So we will make the triangle. 1 triangle, 2 triangle, 3. 1, 2, 3 and 4. 4 triangle. So we multiply 180 multiply by 4 is equal to 360. This is the one method of finding the angle sum, but there is one shortcut method. How you will find? Shortcut method. By shortcut method the formula is n minus 2 multiply by 80. ये फॉर्मूला देखिए इसी से बना है. हमारी इसमें 4 साइड थी, we will multiply by 2. यहाँ पे हमारी 5 साइड थी, but we have multiplied by 3. 5 minus 2 3. This figure has 6 sides. We multiply by 4. 6 minus 2 4. Same formula. For example, pentagon. N is equal to 5. 5 minus 2 multiply by 180. 5 minus 2 3 multiply by 180 is equal to 540 degree. With the help of this formula, we will find the angle sum property of any figure. 10 sided, 20 sided, 30 sided, any figure. Okay. Now next is diagonals. Next is diagonals. What is diagonals? Joining the vertex. Vertex is जिसे हम कोने कहते हैं. Joining the vertex are diagonals. These are diagonals. Now how many diagonals are formed in one figure? This is quadrilateral. So how many diagonals you will form here? 2. 2 diagonals. Same with pentagon. 1, 2, 3, 4, 5. So we will join. ये दो वर्टेक्स हमारे पहले से कंबाइन है. This 2 वर्टेक्स 3. और कौन से वर्टेक्स हम ज्वाइन कर सकते हैं इनको? We will join this and this. So 5 diagonals are there. So shortcut method of finding the diagonal. N minus 3
by में 2. N is number of sides. So same with pentagon 5. We will take 5. 5 minus 3 by में 2. 5 minus 3 is 2. By में 2. We will cut 2. Answer is 5. So there are two methods. Whether you will draw and count, or you will find from the shortcut method. So these are the diagonals. Now the angle sum property of the exterior angle. Sum of all angles, all exterior angles in a polygon, not only quadrilateral, polygon, 2-sided, 3-sided, 4-sided, 5-sided, is always 360. It's always 360. It is fixed. I will make one figure. 1, 2, 3, 4. So I think this is a rectangle. All angles are of 90 degree. So find exterior angles. 1, 2, 3, 4. So angle 1. When any two angles form on the straight line, जब एक सीधी लाइन पे कोई भी दो एंगल्स बनते हैं वो हम हमारे लीनियर पेयर्स होते हैं. लीनियर पेयर, द सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180. इन दोनों एंगल्स का सम है 180. तो अगर हमारे पास 60 है तो दूसरा क्या होगा? 180 माइनस 60, 120 डिग्री. ये हमारे लीनियर पेयर्स हम कोई भी निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन वाले एंगल्स. तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 डिग्री. एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 डिग्री. एंगल 3 is equal to 180 minus 90, 90 degree. Angle 4 is equal to 180 minus 90, 90 degree with the help of linear pair. So add it, it becomes 360. So like this you will find the exterior angle of any polygon, whether it is square, whether it is quadrilateral, any quadrilateral, whether it is pentagon, any. So next is topic is in a regular polygon. I am running this. In a regular polygon, all the interior angles and all the exterior angles are equal. Always. All interior and exterior angles are equal. If I say one exterior angle is given, one exterior angle is of 40 degree. You have to find the number of sides of a polygon. Number of sides. So how you will find? I know that the sum of all the exterior angle 360. So we will divide the 360 by one exterior angle. 360 divided by 40. 9. Number of side is 9. Same with when you have to find one exterior angle and number of side is given. One exterior angle is equals to 360 by number of sides. 360, number of sides are 9. So one exterior angle is of 40 degree. This is all about polygon. Now I will start quadrilateral. Quadrilateral itself means quadri 4 lateral sides. We will discuss the properties of this quadrilateral. First of square.
सबसे पहले स्क्वायर की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑल द एंगल्स आर इक्वल. ऑल द एंगल्स आर इक्वल मींस ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. ओके. सेकंड, ऑल द साइड्स आर आल्सो इक्वल. स्क्वायर की सभी साइड्स बराबर होती है. एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. जो डायगोनल्स इसमें हम बनाते हैं वो इक्वल होते हैं, ऑफ इक्वल मेजरमेंट, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर. ओके. नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल? ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, मतलब ऑल द एंगल्स आर इक्वल of 90 degree. Opposite sides are equal. Length is equals to length and breadth is equals to breadth. And diagonals are equal and bisect each other. Now again the same property. Diagonals equal भी होते हैं और bisect भी करते हैं एक दूसरे. Okay. Third is parallelogram. Some interesting fact is, हमारे पास अगर रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, अगर हम उसको थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, थोड़ा से हम उसको जब उसको पुश करेंगे तो ये थोड़ा सा इस शेप में आ जाएगा. दैट बिकम द पैरेललोग्राम. अगर हम थोड़ा पुश कर देते हैं वो पैरेललोग्राम की शेप बन जाती है. सेम हियर. सो पैरेललोग्राम इज ऑफ दिस शेप. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंड डायगोनल नॉट इक्वल बट ओनली बाइसेक्ट ईच अदर. एक दूसरे को काटते हैं इक्वली. And the sum of the consecutive angles are of 180 degree. Now I will explain the consecutive. These are two parallel lines and this is transversal line. So angles formed in between these two parallel lines. जो दो parallel lines के बीच में बनते हैं, इनका सम हमेशा 180 होता है. Same with here. So these angles are of 180 degree. Same with the square, same with the rectangle, same with the parallelogram in case of consecutive angles. Okay. Next is rhombus. Some interesting fact of rhombus is also when we tilt, when हम एक जैसे हमने रेक्टेंगल को बनाया था, ऐसे हम स्क्वायर को जब थोड़ा सा पुश कर देते हैं, it becomes the rhombus. There are two shapes of rhombus, this and this. It's something like kite, but this is not kite. So the properties of rhombus is all sides are equal. Rhombus has all its sides equal. Diagonal bisect each other at 90 degree. Diagonals makes an angle of 90 degree, and all angles are also equal in rhombus. Now next is trapezium. What do you mean by trapezium? This is the shape of a trapezium. In trapezium, there are two parallel sides and two non-parallel sides. First property is there are two parallel sides and two non-parallel sides. And the sum of the consecutive angles, which we have explained you earlier, what are consecutive angles? So the sum of two consecutive angles are of 180 degree. These are two consecutive angles. Angles between two parallel lines are consecutive angles. Sum of the consecutive angle is 180 degree. Kite. Next is kite. All you have seen the kite. आप सबने देखी हुई है kite. तो kite में क्या होता है, हमारे पास these adjacent angles are equal. साथ साथ वाले एंगल्स हमारे पास बराबर होते हैं. ओके. एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो काइट हैज नॉट मोर देन टू प्रॉपर्टीज. काइट की दो ही प्रॉपर्टीज होती हैं, ज्यादा नहीं होती है. मेनली दिस 5 क्वाड्रेटर वी विल यूज इन क्वेश्चंस और इन एनी अदर थिंग्स. काइट मेनली वी यूज वेरी लेस. So these are the topics of the quadrilateral.